गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेईई मेन PYQ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 27 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 5 + 3 टू द पावर है यहाँ पे लॉग स्क्वायर रूट में log बेस 3 5 -5 टू द पावर है log बेस 5 3 x, राइट, प्लस व्हाट 3 एंड ब्रैकेट क्या है यहाँ 3 टू द पावर क्या है log बेस 3 5 होल टू द पावर 1/3 -5 log बेस 5 3 होल टू द पावर 2/3 -1 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स जो है अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा है। So to solve this equation first I will solve this, simplify this bracket part, right? So bracket part में मैं पहले 3 to the power स्क्वायर रूट में log क्या है बेस 3 5 है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। So what we can write here is log 3 to the power जो log बेस 3 5 है इंटू इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस 5 5। log बेस 5 5 क्या होता है 1, बेसिकली log में a जो होता है वो होता है 1। ओके, सो आई राइट है 5 5 बिकॉज दूसरा जो रूट है, दूसरा जो पावर है उसमें क्या है log बेस 5 है। सो देन व्हाट वी कैन डू हियर इज, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या log बेस 3 5 इंटू log बेस इस 5 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 इंटू वट log बेस 5 3। ओके 5 3। सो व्हाट वी कैन देन राइट दिस इज log बेस 3 5 का होल स्क्वायर हो गया जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, तो सो वी कैन राइट दिस एज log बेस 3 5। ओके log बेस 3 5 एंड इसके साथ इनटू में क्या हो गया अंडर रूट में log बेस 5 3। सो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, यहाँ पे एक फार्मूला क्या यूज होता है a टू द पावर log बेस a fx अगर है, log बेस a fx है, a टू द पावर log बेस a fx है, सो दिस इज इक्वल टू fx। सो सेम हियर log यहाँ पे 3 की पावर में क्या है 3 की पावर में log बेस 3, सो बेस हियर इज सेम, log का बेस 3 है, यहाँ पे 3 है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। सो 5 टू द पावर क्या हो गया log बेस 5 3 इन स्क्वायर रूट, राइट, log बेस 5 इन स्क्वायर रूट 5 3 इन स्क्वायर रूट, सो दिस वैल्यू, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो ये वाला पार्ट जो है हमारा, दिस पार्ट यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गया, सो दिस टू वैल्यू विल बी कैंसल आउट। नाउ सेम इस वाले ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, सो व्हाट वी हैव हियर इज 3 टू द पावर, हमारे पास क्या है 3 टू द पावर है log, व्हाट वी हैव हियर log 3 बेस 3 5, सो आई राइट हियर द log बेस 3 5 एंड होल टू द पावर व्हाट 1/3, होल टू द पावर व्हाट 1/3। ओके, सो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, so we can write this as same thing same way, right, log base 3 5 into what log base 5 5, okay, log base 5 5 and whole to the power what 1/3। now we can also write this as log base 3 5, right, log base 3 5 और मैं इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, राइट, सो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। नाउ वी कैन राइट दिस एज, इसको क्या लिख सकता हूँ log base 3 5 इंटू log base 5 3, okay 5 3 and whole to the power 2, right, and the complete bracket and to the power 1/3। now this is what basically 3 to the power log base 3 5, this is log base 3 5 and into what log base 3 5 whole square, log base 3 5 whole square into this is what log base 5 3 whole square and whole to the power what 1/3। now if you see this is what, this is 3 power log base 3 5 whole to the power, this is 1 power, this is 2 power, so we can write this power 3 into log base 5 3 and 2 whole to the power 2 and the complete power 1/3। so now we can write this as 3 log base 3 5 to the power 3, so power will distribute here, so power 1/3 and into what log base 5 3 to the power 2/3, so this 3 and 3 get cancelled। the same property we will use here is what, same property is log base a, right, a to the power suppose a to the power this one fx, right, fx, so we can write this is equal to fx, a to the power log base a fx, then it is equal to fx।
So for this part we can write this as, this is equal to 5 log base 3, right, 3 to the power log base 3 5. So that is what, basically 5. So we can write this as 5 to the power log base, what we have here, log base 5 3, right, log base 5 3, and whole to the power 1 by 3, 2 by 3, basically 2 by 3. Okay, this is equal to what, 2 by 3. So you can see here this result is equal to, this is what, 5 3. Okay, this is base 5 3. So this result and this result is equal. So this result is equal to this result, right, this result, these two results are basically equal. Okay, so when these two results are equal, so we can cancel this plus minus sign. So here again this two value can be cancelled out. So our equation becomes, जो equation है now, जो quadratic equation है, that becomes what, x square minus 5x, x square minus 5x and minus 3, right, minus 3 equal to 0. Okay, fine. Now the alpha and beta are roots of this equation. Alpha beta are roots of this equation, So now we can write the sum of roots. So sum of roots is minus b by a, so this is what, 5. Okay, and product of roots, that is c by a, so this is equal to what, minus 3, a is 1. So we can also find what here, now we will find what the new quadratic equation whose roots are, right, quadratic equation whose roots are alpha plus 1 by alpha, right, sum of roots. So I am going to find the sum of roots for the new equation, new quadratic equation whose roots are alpha plus 1 by beta and beta plus 1 by alpha. So I write here alpha plus 1 by alpha, alpha plus 1 by beta plus what, plus beta plus 1 by alpha, beta plus 1 by alpha. So to solve this, what I write here is alpha plus beta together, and for this two part I take the LCM alpha beta. So here alpha plus beta, so alpha plus beta is basically 5. So write here the 5 by minus 3. So this is what, 15 minus 5 divided by 3. So this is what, 10 by 3, sum of roots. Okay, sum of roots is 10 by 3. In the same way we will find the product of roots. So right, so product of roots is what, product of roots. So product of roots is what, alpha plus 1 by beta into what, beta plus 1 by alpha. So just multiplying this two, so alpha into beta, alpha into 1 by alpha is 1, 1 by beta into beta is 1, and 1 by alpha beta. So alpha into beta is minus 3, this is plus 2, and this is minus 3, so minus 1 by 3. So now you can see here this is was minus 10 by 3 plus 2. So we can write here minus 10 plus 6 by 3. So this is minus 4 by 3. So therefore the quadratic equation, new quadratic equation, that is what, x square, right, x square minus sum of roots, right, sum of roots into x plus product of roots, and that is equal to what, that is equal to 0. So sum of roots is what, sum of roots is, we have found here the sum of roots is 10 by 3. So we can write here the x square minus 10 by 3x, and the product of roots is what, minus 4 by 3. So minus 4 by 3 equal to 0. We can take the LCM here, so 3, so this is what, 3x square minus 10x minus 4 equal to 0. So this is 3x square minus 10x minus 4 equal to 0. So the new quadratic equation is this one. If we see the option, the x square, 3x square minus 10x, right, minus 4, the second option is the correct option. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.